Dear friends, welcome to my Edu Dreams. I hope this video is helpful for students who are pursuing B.Ed, M.Ed, D.El.Ed, MBA, UPSC, PSC, etc. etc. In this video, we will discuss about top 10 tips for getting distinction marks in theory examinations. This is the presentation by Dr. Syed Hayat Basha, who is Assistant Professor of Education in Aligarh Muslim University Center, Malappuram, Kerala. Top 10 tips for getting distinction marks in theory examinations. So, there are top 10 tips which are very important for getting distinction marks in theory examinations. In various examinations like B.Ed, B.Alb, M.Ed, D.El.Ed, etc. etc. So, these tips we will discuss one by one. The number one tip is well preparation. Before going to exam, you have to prepare well. Whenever you are interested, then only you prepare for the examination. When you feel bored, don't prepare for that. Well preparation is required for getting distinction marks. Without preparation, you cannot get marks. It is very important to prepare thoroughly for each and every subject. The other important point is the number 2 tip is revision. After preparing, you have to revise the content. Revise the content, repeat the content and recall the content. How many times, how much you revise, that is most important for getting distinction marks. Number 1 tip, we have discussed preparation. Preparation is very important. Without preparation, you cannot get marks. Second one, revision. Revision is most important. So, revise as much as you can revise. You revise before going to the examinations. The third important tip is take sound sleep. Sound sleep is required before examination. Friends, what happens most of the time, students due to pressure, due to stress and mental pressure, students will not get proper sleep before commencement of the examination. Before the exam, they will not take sufficient sleep, sound sleep, well sleep, they will not sleep properly. That is why when they appear in the examination, they feel drowsy, they feel sleepy, they feel they will not be getting full interest in writing the examination. That is why lack of sleep is one of the reason to get low marks or to get less marks. So, proper sleep is very necessary one day before the exam at least. One day before the exam, as a student, you have to take full sleep, proper sleep. And then the fourth important point is reach exam hall 30 minutes before commencement of the exam. I have seen most of the students, they are coming in the examination just either after 5 minutes or before 5 minutes. This 5 minutes is not necessary. You have to come for the exam before 30 minutes before. Generally, it is also written in the examination hall. Reach the examination hall 30 minutes before, 1 hour before, half an hour before, at least 15 minutes before. Here I recommend you to reach the examination hall 30 minutes before commencement of the examination. Most of the students, they reach in the examination hall 5 minutes before or after, and so they will commit mistakes and they will not feel free in the examinations. And
Fifth important point is read question at least thrice. What happens, most of the students, they will not read the question. If they read, they will read just once, only one time they will read the question and they will start writing the answer. After completing the answer, when they are writing second one, again they feel that they will check the answer, so sometimes they might have written incorrect answer for the question. That is why it is very important to read the question at least thrice, 3 times you have to read at least the question. And sixth important point is time management. Most of the students, after the invention of mobile smartphone, even they are not maintaining their watch. They are not keeping the watch, that is why they are unable to manage the time. Most of the times they dependent on the government watches, means, so because, so they feel hesitation, they will not properly manage the time. Time management is very essential. When they are writing for the first question, as per the questions, you have to divide the timings. For example, if you are writing a long answer, you have to devote some time, extra time or much time for long answers and less time for the short answers. Because many students, they fail, they will not attempt all the questions. When we are asking them why you did not attempt all the questions, they may say that, okay sir, I was not getting sufficient time, proper time, I was lacking time, that's why I could not answer the questions, I could not attempt all the questions. So if you are keeping watch, maintain, devote some time, much time for long answers and some time for short answers. So this is very important. Time management is very important and it is very important tip for the students. Another important tip is take a short break during examination if there is a permission. What happens if we are writing continuously, if we are sitting continuously more than 1 hour or more than half an hour, generally a students will feel bored, or sometimes he will not be getting full interest on the in writing the answers. So it is recommended, if possible, if there is a permission from the examination center or in the examination hall, you just take a break in the name of going washroom, or in the name of drinking water, or you take some water or go to washroom immediately, and then if you are taking break like this, a short break, then again you can focus and start writing the questions with fresh mind. So taking break is also necessary and it is recommended. So now the other important tip is use only 2 good pens, one for writing and other one for underlining, and keep 2 extra pens, one for yourself and another one for others. If they are asking, you can give one pen to your colleagues or whoever is needing the pen, whoever is asking the pen. If you are keeping, most of the times students, I have seen many students, they are coloring the answers with so many color pens, so many highlighters. It's not necessary to have more than 2 pens, more than 2 pens for while writing the answers. If you have good 2 pens are enough. One you can
use for writing the answer and another you can use for underlining the answer. So now the next important point is attempt all the required questions and don't skip mandatory questions. Most of the times, as I said in the earlier also, due to lack of time, many students they will not attempt all the questions, required questions. That is why they lose marks. And sometimes there are some mandatory questions, compulsory questions. Those questions also they will skip. That is why there are high chances to lose marks in the examination. So try to attempt all the questions and don't skip, especially the mandatory questions, especially those questions which are compulsory in the examination. So this tip is very important. Now the last important tip is top 10 tip. Check all the questions and answers before submitting the answer sheet. Most of the time what happens, you might have students may be writing incorrect numbers and sometimes they may be writing incorrect questions and also they might have forgotten the numbering the questions. So before submitting the answer sheet you have to check all the questions and tag the paper properly and hand over to the invigilator. दोस्तों अब हम हिंदी में चर्चा करेंगे टॉप 10 टिप्स वो कौन से हैं जिसको अपना कर डिस्टिंक्शन यानी ये ++ नंबर आप हासिल कर सकते हैं थियरी एग्ज़ामिनेशन में। नंबर 1 टिप, सबसे पहली टिप ये है कि वेल प्रिपरेशन। आपको सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से स्टडीज़ करना है। जब आपका मन लगे तभी आपको तैयारी करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको सुबह का वक्त सही लगता है तो सुबह के वक्त में आप तैयारी कीजिए, स्टडीज़ कीजिए, दिल लगा कर पढ़िए, जान लगा कर पढ़िए और बहुत ज़्यादा पढ़िए, इतना पढ़िए कि किताब खुद शर्मा जाए आपके पढ़ने से। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप खेलिए, कूदिए, जो काम करना है कीजिए, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल मोबाइल स्विच ऑफ करके और दुनिया से अलग होकर आप बैठना है, तैयारी करना है, प्रिपेयर करना है। जब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे तरीके से आएंगे। तो अगर आप तैयारी ठीक से नहीं करेंगे तो फिर नंबर भी उसी तरह से आपको मिलेंगे। तो नंबर 1 टिप है प्रिपरेशन। आपको तैयारी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है और उस सिलेबस में जो भी है उन सब के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है। नोट करके एक समरी नोट्स बनाना है और फिर उसको जो दूसरा नंबर 2 टिप है इम्पॉर्टेंट टिप, वो रिवीजन करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। रिवाइज करना है, रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा रहे हैं तो आपको कोई भी टॉपिक याद आई तो उसके बारे में आपको सोचना है कि भाई हमने क्या पढ़ा था, रात में क्या पढ़ा और फलानी टॉपिक में क्या है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको दोहराते रहना है। जब आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी तो आपका रिवीजन समझ लो कि आपका रिवीजन ठीक चल रहा है। रिवाइज करना है, रिपीट करना है और फिर उसको रिकॉल करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3R मेंशन किया है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है और रिकॉल करना है। तीसरी अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साउंड स्लीप। साउंड स्लीप इज़ रिक्वायर्ड बिफोर एग्ज़ामिनेशन, यानी एग्ज़ामिनेशन से पहले आपको बहुत अच्छे से नींद लेना है, बहुत अच्छे से आराम करना है। जब आप
ठीक से सोएंगे नहीं रात में तो फिर दिन में भी एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्मेंस आपका ख़राब रहेगा। इसीलिए एग्ज़ामिनेशन से एक दिन पहले मतलब रात में बहुत अच्छे से आराम करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा एग्ज़ामिनेशन में। तो इसीलिए सबसे अच्छी साउंड स्लीप आपको लेना ज़रूरी है। चौथी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि रीच एग्ज़ाम हॉल 30 मिनट्स बिफोर, यानी आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू होने से 30 मिनट पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में दाखिल होना है, वहाँ पर जाना है। अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल बंद है तो आपको बाहर इंतज़ार करना है, अगर खुला है तो जाकर अपनी सीट यानी रोल नंबर ढूंढकर वहाँ पर बैठना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत देर से पहुँचते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से वो एग्ज़ामिनेशन का परफॉर्मेंस भी ख़राब कर देते हैं। रीड क्वेश्चन एटलीस्ट थ्राइस। हमारी जो पांचवी इम्पॉर्टेंट टिप है, प्रश्न को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रश्न समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए कम से कम 3 मरतबा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, 3 बार प्रश्न पढ़ना चाहिए, उसके बाद आंसर लिखना, उत्तर लिखना शुरू करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अहम टिप है और ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो बग़ैर घड़ी के बग़ैर आ जाते हैं और सरकारी घड़ी पर डिपेंड हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकारी घड़ी ख़राब भी होती है, अगर घड़ी ना मिले तो वो टाइम मैनेज करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी ओन घड़ी रखें, ठीक है, और उसके बाद टाइम मैनेज करना सीखिए। अगर आप पहले क्वेश्चन के लिए लॉन्ग आंसर्स के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत कम समय उसके लिए दे सकते हैं। तो इसी तरह से समय को मैनेज करना होता है। जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो आपके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिंक्शन नंबर हासिल कर सकते हैं। तो टेक ए शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन इफ़ देयर इज़ ए परमिशन। अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप छोटा सा ब्रेक लीजिए, ताकि आप वॉशरूम होकर आइए, या फिर आप पानी पी सकते हैं। आप पानी भी पी सकते हैं। जब आप पानी पिएंगे तो आपके अंदर एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, और फिर एक बार ब्रेक लेंगे तो उससे आपका परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा। अगर आप कंटिन्यूस 2 घंटे या 3 घंटे तक बैठे रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सलाह है कि आप कोशिश करें कि एक शॉर्ट ब्रेक लेने की, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। यूज़ ओनली 2 गुड पेन्स। तो अक्सर देखा गया है कि बच्चे कई सारे पेन लेकर आते हैं, जैसे ग्रीन पेन, पिंक पेन और येलो पेन, ब्लैक पेन, तरह तरह के पेन लेकर आते हैं, और जिसको तरह तरह से उसको लाल पीला हरा कर देते हैं एग्ज़ामिनेशन में, जिसकी वजह से उसका गलत इम्पैक्ट, बैड इम्प्रेशन एवेल्यूएटर के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि सिर्फ 2 पेन रखें, अच्छे पेन रखें। एक पेन लिखने के लिए इस्तेमाल करें और दूसरा पेन अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करें, और तीसरा एक्स्ट्रा पेन भी रखें, ताकि अगर उसकी हेल्प हो सके तो एक्स्ट्रा पेन रखिए ज़रूर, ताकि आप दूसरों को देने के लायक बने और उसकी भी मदद कर सकें। Attempt all the required questions and don't skip mandatory questions. प्रश्न पत्र में ये होता है कि कहीं पर कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं और कहीं पर कुछ और क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर उसको करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग।
ये 1 जो है इसको अंडरलाइन भी किया होता है, तो ऐसे वर्ड्स को बच्चे भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैंडेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस, तो इसको लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसका बैड इम्प्रेशन पड़ता है एवेल्यूएटर के ऊपर। जब एवेल्यूएटर नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो आपको नंबर कम मिलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जितने क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रश्न पत्र में 6 क्वेश्चंस आपको करना होता है, तो आप 6 के 6 क्वेश्चन कीजिए। अगर आप 6 में से 4 करते हैं या तो फिर 5 ही करते हैं, तो भी आपको नंबर डिस्टिंक्शन नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितने क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए, और मैंडेटरी क्वेश्चंस को कभी मत भूलिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला टॉप 10 टिप है हमारा, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेक ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट। एक बार आंसर शीट जमा करने से पहले आप सारे क्वेश्चंस को देख लें, सारे प्रश्न को देख लें, ताकि उसका नंबर आपने ठीक से किया है नहीं किया है। नंबरिंग करना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा स्टूडेंट्स नंबरिंग करना भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि हमने तो हेडिंग और टॉपिक लिख दिया है, जिसकी वजह से टॉपिक अगर नहीं लिखते हैं तो जिसकी वजह से नंबर कम मिलने के चांस होते हैं। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें और उसका नंबरिंग ठीक है या नहीं है, और उसको टैग ठीक तरीके से करें और उसको जमा करें। तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन टॉप 10 पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो आपको डिस्टिंक्शन नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, और डिस्टिंक्शन नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। I hope you will get distinction marks in your examination. Thank you for watching. Best of luck for your examinations, and don't forget to like and subscribe to the channel for future videos.